Question number 15b. The beam of light consisting of two wavelengths, right? 800 nanometer and 600 nanometer, used to obtain interference fringes in Young's double slit experiment. On a screen distance given, slit separation given. 800 nanometer and 1600 nanometer. 800 nanometer ta nijo pattern dabo, 600 nanometer ta nijo pattern dabo, interference pattern. But se interference pattern daba bhitere farak kon rahibo ki mate कहबो दिजन जाकर interference pattern रे difference kon rahibo? Who can tell me? दिजन को fringe with Fringe with Fringe with different different habo hela semanko fringe with different habo tal fringe with semanko same haboni, right? कार fringe with अधिक habo lambda द्वारा माने 800 अधिक हबो ताल सेमानको फ्रिंजेस गुडा इक्वल स्पेस नै कि समान रहिबेनी जे न रहिबे बेले बेले ता डार्क पाखरे आर ब्राइट पाखरे ता डार्क एमति पड़ी जिवो बेले बेले डार्क बेले बेले ब्राइट एमति सब पड़ी जिवे प्लीज क्वेश्चन पचाउची सेंटर रु किते डिस्टेंस रे दी जण जाकर ब्राइट फ्रिंज दिटा कंसीडर करिवे मिनिमम एटा क्वेश्चन बुझा पड़ला नै सेंटर रु केते डिस्टेंस रे दी जण जाकर ब्राइट फ्रिंज दीटा कंसीडर करिवे सेति कि बुझा पड़ला ना नै मते को Yes, sir. ओके देखो तार केते डिस्टेंस रे ब्राइट फ्रिंज कंसीडर करिवे गोटे काम करिवा जदि दी जण जाकर ब्राइट फ्रिंज कंसीडर करिवे ताले हम काम करिवा तांको ब्राइट फ्रिंज रे डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर इक्वल हेतिबो ता माने y 800 वाला रो जहा आसीबो y 600 वाला रे भी से आसीबो तब तक y टा समान होबो ना सेंटर रु Yes, sir. स्क्रीन हला एठी मनकर कंसीडर करछि दिजन जाकर ब्राइट तले ए y टा तो दिजन जाकर सेम ही होबो ना 600 रो जहा भी y 800 रो से y होबो खाली फरक कोन रहइबो तांकर नंबर से फ्रिंज रो नंबर टा अलग हे पारे माने आर 7th नंबर फ्रिंज हेला को तार 8th नंबर फ्रिंज हेतै पारे आर 10th नंबर हेला को तार 12th नंबर फ्रिंज हेतै पारे एमति हेतै पारे किंतु एटा ट्रू कि तांकर डिस्टेंस दिटा समान हबो ब्राइट फ्रिंज जोटी कंसीडर करछन ताले एटी मो बतन फार्मूला लिखि देबी n लैम्बडा d by d n कोन n तो मु जानि नि केते नंबर फ्रिंज बोली मु ताको n1 दे दोची एटी लैम्बडा d by d हला ए लैम्बडा टा होची 800 वाला लैम्बडा एटी सेमती n2 मु n2 देली कान r एटा अलगा हेतै पारे ए लैम्बडा टा होची 600 वाला लैम्बडा इनटू d by केते ना d ठीक अछि तले d कटि गला ओके dd कटि गला तले n1 into 800 n2 into 600 तले मते को n1 by n2 केते आसला केते आसला 3/4 600 by 800 so it's coming 3/4 ता माने सेतरे गोटे नंबर हे परिबो n1 3 and n2 4 हेले बेटा सैटिस्फाई करिवो n1 6 n2 8 हेले भी सैटिस्फाई करिवो n1 9 n2 12 हेले भी सैटिस्फाई करिवो ता माने 800 वाला रो थर्ड फ्रिंज 600 वाला रो फोर्थ फ्रिंज सेट कंसीडर करिवो 800 वाला रो सिक्स्थ फ्रिंज 600 वाला 8th फ्रिंज सेट कंसीडर करिवो माने मैक्सिमा नेक्स्ट मैक्सिमा भी कंसीडर करिवो हला आर 9th मैक्सिमा कार 800 रो 600 रो 12th मैक्सिमा से तो कंसीडर करिवो माने ए जगह से मैक्सिमा कंसीडर करिवो बट से क्वेश्चन कोन देछि लीस्ट डिस्टेंस माने तळाडू फास्ट कोटा कंसीडर करिवो तो फास्ट कोटा कंसीडर करछि कि फास्ट कोटा कंसीडर करछि 3 और 4 फास्ट को पेयर ता 3 और 4 बुझा पड़छ तो फास्ट पेयर इज व्हाट 3 and 4 understood so fast pair is 3 and 4 okay ता माने n1 is equal to 3 n2 is equal to 4 मु काहे कि n3 और 4 नेली बिकॉज़ तळाडू से लीस्ट डिस्टेंस कहै सेना 3 हां एटा ट्रू हला 800 वाला रो थर्ड ब्राइट फ्रिंज
600 वाला फोर्थ ब्राइट फ्रिंज कंसीडर करिवे किंतु सेमानकर डिस्टेंस केते हो सेंटर रु क्वेश्चन पछे केते डिस्टेंस रे कंसीडर करिवे तबे डिस्टेंस टाइम बाहर करिवे y कोन बो y जे कोनसी गोटे फॉर्मूला रे पके दियो जदि एटा रे पकेबो तमे तले n1 लैम्बडा d by d यदि 800 वाला रे पकेबो तले तमे n1 टाको 3 नबो 3 into 800 नानोमीटर तापर कैपिटल डी तुमको दिया है छि स्मॉल डी तुमको दिया है छि तुम सेटा निजे नहीं परिबो क्वेश्चन देखि कैपिटल डी केते स्मॉल डी केते कैपिटल डी केते दिया है छि 1.4 मीटर स्मॉल डी 0.28 millimeter 1.4 मीटर एटा 0.28 मिलीमीटर कैलकुलेशन इज योर्स करके तो y बाहर करो दिस द आंसर एटा होचे एनसीईआरटी बुक रे एक्सरसाइज क्वेश्चन किंतु से एक्सरसाइज रे गोटे छोटा मिस्टेक कर दिछ एनसीईआरटी बुक से कैपिटल डी और स्मॉल डी देनी किंतु क्वेश्चन ला पचार देछि ओके जदी देनी ठीक अछि तमे एनसीईआरटी बुक रो क्वेश्चन कला पिला माने स्मॉल डी कैपिटल डी छाडी दियंती सेमति लिखि देइ बट हमर तो एटा देछि क्वेश्चन हले then we can able to do it calculation कला पर की आंसर पाइलो की हां सर सर एमन जो कोइंसाइड करिवे तो कंप्लीटली कोइंसाइड करिवेनी ना कंप्लीटली न करि पारंती ओके कंप्लीटली कोइंसाइड कर न पारंती बट कोइंसाइड करिवे हला ठीक अछि एनी डाउट दिस सर इज वेरी जदि हमें इंपोर्टेंट 600 वेवलेंथ रे करिबा ताहले आंसर सेम आसीबो 600 रे कले हां 600 कले तुम 600 वाला जदी करबो तले तुम एटे n2 नबो ना n2 नले n2 केते 4 नबो यस सर 3 into 800 केते ला 2400 सेमति 4 into 600 केते से भी 2400 यस सर सेम हो सेम ही आंसर हला बट ए नानो फानो देछि तुम ताको मीटर रे कन्वर्ट करियो मिली की भी मीटर करियो एट लास्ट यू गेट एन आंसर की आंसर पाइले कि तुम मन को भीतर वर्तमान कैलकुलेशन करिकी So 1.2 into 10 to the power minus 2 meter. यस So 1.2 into 10 Yes. to the power minus 2 meter. -2 मीटर so more also Is it? 12 centimeter हां तो सर 1.2 1.2 सेंटीमीटर cm आछी 1.2 cm more बोलती है यस सर agree all are 1.2 cm yes sir Yes, sir. okay Yes, sir. then 1.2 cm. okay then 1.2 cm is the answer very nice then go to the next important question this question 13 I told sample paper 2014 question again sample paper 2015 question also this one then this question came in the board examination in 2019 okay very very important see question number 13 shifting of a source slit question the figure drawn here shows a modified Young's double slit experiment set off if S2 minus S1 is equal to lambda by 4. State the condition for constructive and destructive interference. Obtain the expression for fringe width and locate the position of a central fringe. Okay. ये क्वेश्चन भी ऊपर बहुत रा अछि किंतु एटा रे फुल अछि क्वेश्चन टा अलग अलग जगह रे आरो गोटे बिट पचरिबो नल दीटा बिट पचरिबो एमति पचरि छी ये गोटे बढ़िया क्वेश्चन हे परिबो लेट्स डू दिस क्वेश्चन इट्स इंपोर्टेंट क्वेश्चन सी एक्चुअली क्वेश्चन टा कोन तमे यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट जतले पढिथिलो तमे टिके मने पकाओ तो डबल स्लिट रो राइट साइड पार्ट को देखिथिलो बट ता पछ पट को तमे केबे कंसीडर करना पछ अछि कोन एटा यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट रे अरेंजमेंट डबल स्लिट एटी स्क्रीन रहउतला पी पॉइंट रहउतला एटी S1 रहउतला पी एटू S2 रहउतला पी एटी सोर्स स्लिट रहउतला सोर्स स्लिट रहउतला ठीक है तो सोर्स स्लिट S रु S1 को लाइट गला S रु S2 को लाइट गला तापर P को गला एक्चुअली जो लाइट टा तमे पाथ डिफरेंस कैलकुलेट करथला तापर एठी यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट टिके मने पका तम माने पाथ डिफरेंस कैलकुलेट करथला del x S2p minus S1p
इज इक्वल टू टिके मने पडुथबो समस्तनकर y स्मॉल d बाय कैपिटल D आसीथिला Yes, sir. हला बट तमे पार्ट डिफरेंस कैलकुलेट कला बेला s2p माइनस s1p करथला तमे ई पछटा को इंपोर्टेंस दे नथला एक्चुअली लाइट ता जो p रे पहुंचुची भाया s1 ताको केते डिस्टेंस ट्रैवल करियो पडुची S s1 प्लस s1p आ जे s2 देखि जाउची ताको केते डिस्टेंस ट्रैवल करियो पडुची S S2 plus S2 p बट तमे काहे कि पछटा को इंपोर्टेंस दे नथला स्लिट रे पछपटा को सिमेट्रिक बोली कि दीटा का इक्वल है बिकॉज तमे तमरो ओरिजिनल सोर्स को सिमेट्रिक रखि देला जोथि पे कि ss1 और ss2 बाय डिफॉल्ट कैंसिल हो जाउतला तमे ते डिफिकल्ट को जाय ना सेत पे तमे ते इंपोर्टेंस ताको दे नथला किंतु हमें ताको एबे इंपोर्टेंस दबा काहे कि हम क्वेश्चन कहूची जे से माने सिमेट्रिक नाहंती ss2 ss1 टू टिके बड़ा अछि ओके केते बड़ा अछि ना लैम्बडा बाय 4 समस्त क्वेश्चन ताको आउथरे टिके नजर पके दियो लैम्बडा बाय 4 से बड़ा अछि देखो से लिखि छी ss2 माइनस ss1 इज इक्वल टू लैम्बडा बाय 4 ता माने सिकोची पाथ डिफरेंस अछि तमे बे मना करि परिबन ओके तो पाथ डिफरेंस अछि तले हम कोन करबा से बळे केस रे देखो एबे मु ताको इन जनरल क्वेश्चन ताको कर दोची मु लैम्बडा बाय 4 पुट करबिनी मु ता जगह रोटे सिंबल लेके कर दोची लेट पाथ डिफरेंस इज डेल्टा x डैश तापर मु काई कहूची ना बिकॉज़ से क्वेश्चन ता आउरी ऊपर ऊपर पडिची आउरी अलगा जगह रे भी से क्वेश्चन अछि सेम क्वेश्चन बट सेठी लैम्बडा बाय 4 पाथ डिफरेंस न नै थे पारे कोठी कोन पाथ डिफरेंस लिखिथिबो जोड़ जा देथिबो तुम निजे पुट करके कर परिबो हला ओके सो ये हमरा असला एटा तो पाथ डिफरेंस एडिशनल ऑलरेडी अछि एटा तो ऑलरेडी थिला हम जानि थिले s2p s1 पे आगुरु एबे सोर्स लेटर को हम शिफ्ट कर दबा मैं शिफ्ट कर दो देखो 8 थिला आगुरु मैं 8 की शिफ्ट कर देली एटा ss1 हेला एटा ss2 हेला एबे तो आसी गेला ना पार्ट डिफरेंस नो डाउट ओके लगी गयो ड्यू टू शिफ्टिंग ऑफ अ सोर्स स्लिट let delta x dash is the path difference due to shifting of a source slit let delta x dash is the path difference okay let delta x dash is the path difference due to shifting of what source slit I mean really shifting of a source slit जो delta x is the path difference माने additional path difference okay delta x ला additional path difference x dash में symbol यूज करी छी right कने से ऊपर को शिफ्ट हो गला जोटे कि हम क्वेश्चन दे छी हम केते बोली एग्जैक्टली लैम्बडा बाय लैम्बडा बाय 4 4 बट मो एठी लैम्बडा बाय 4 नोनी हला मो सिंबल नै कि करूची हां फर्स्ट डेल्टा x इज द additional path difference देखो देयरफॉर टोटल पाथ डिफरेंस तल केते आसला बे टोटल पाथ डिफरेंस इज इक्वल टू डेल्टा x डैश प्लस डेल्टा x बट डेल्टा x डैश हमर रहिला मु जानि नि केते बोली बट ए पर्टिकुलर क्वेश्चन पे तुम चाहिले लैम्बडा बाय 4 पके परिबो बट मु इन जनरल करूची आ डेल्टा x ता तुम जानि छ y स्मॉल d बाय कैपिटल D ओके दिस इज द टोटल पाथ डिफरेंस एट द टोटल पाथ डिफरेंस हला नाउ कंडीशन एबे हम यूज करबे कंडीशन को कंडीशन मैक्सिमा और मिनिमा बाहर करिया सो पोजीशन ऑफ हला बाहर करिया फर्स्ट मैक्सिमा र पोजीशन को जगह मैक्सिमा आसो आमे जेमते हमर कंडीशन पकोतले सेमते पकेबा कंडीशन त केबे चेंज होबनी ना तो कोन कंडीशन थला मैक्सिमा पे पाथ डिफरेंस इज इक्वल टू n lambda डेल्टा x डैश प्लस y d by d is equal to n lambda implies that y is equal to n lambda minus delta x dash divided by a whole into capital D divided by small d. This is the positions of maxima position. Okay.
मैक्सिमा रो पोजीशन पाई साला परे तुम सेंट्रल मैक्सिमा रो पोजीशन बाहर कर दे परिबो काना फॉर सेंट्रल मैक्सिमा n टा केते हबो सेंट्रल मैक्सिमा में n टा केते हबो टेल मी 0 n इक्वल टू 0 तो n टा 0 होला तले y केते आसी minus delta x dash d by d. This is the position of a central maxima. Central maxima a position as minus delta x dash capital D by small d. What you mark about the central maxima? आगुरु central maxima पूरा center रे आसुतला but एबेल central maxima कोठी अछि तळ गोटे शिफ्ट टिके तळ को शिफ्ट हेछि नेगेटिव को पळै छै central maxima 8 हेबो central maxima ए जगह maxima o dash केते शिफ्ट हे गला this much सेट पे माइनस साइन से आछि ओके तो एग्जैक्टली अच्छा ये तळ को कहीं शिफ्ट हे गला तुम तो कह परियो एपट को नहीं की सर s2 ग्रेटर देन सर s2 ग्रेटर देन बिकॉज़ सोर्स स्लिट ऊपर को शिफ्ट हे गला सोर्स स्लिट जब जो डायरेक्शन में शिफ्ट होबो सेटा ऑपोजिट डायरेक्शन में शिफ्ट होबो जदि सोर्स स्लिट तळ को आस्तांदा तले से ऊपर को पळे था ठीक है से जो डायरेक्शन में शिफ्ट होबो सोर्स स्लिट तर ऑपोजिट डायरेक्शन में शिफ्ट होबो ठीक है so this is the for central maxima y is equal to minus delta x dash d by d understood position of central maxima then Yes, sir. destructive interference condition भी तुम बाहर कर परिबो destructive से पचातला destructive पे path reference केते bit b destructive path difference केते हमर थिला condition ए थिला तो 2n minus 1 whole into lambda by 2 yes sir n starts from 1 2 3 like this कल हमर path difference delta x dash plus y d by d 2n minus 1 whole into lambda by 2 then you find y from here okay 2n minus 1 lambda by 2 minus delta x dash whole into capital D by small d this is the position of a destructive interference माने मिनिमा रा पोजीशन बडा सो जाबो बाहर कले आसीओ सेमती होला माने पूरा यंग डबल शिफ्ट डेरिवेशन को हम आउटरे करूचे ओके देन से पचारिबो फ्रिंज विड्थ बाहर कर पचारिबो फ्रिंज विड्थ केमती बाहर करिया पुनी बीटा इज इक्वल टू yn plus 1 minus yn ओके तमे ब्राइट रे पुट करो ताकि भलो हबो ब्राइट रे एटा हम कंडीशन थिला माने पोजीशन एटा ब्राइट रे एटी पुट करो भलो हबो हला n plus 1 whole into lambda minus delta x dash divided by d whole into d n plus 1 मुनली ठीक है n जगह n plus 1 ले ओके इट इज इक्वल टू ठीक तब से माइनस करी पुणी आउथरे n lambda minus delta x dash whole into d by d ओके अब दीटा को माइनस करो कौन आंसर आछे देखियो सर से बीटा पार्ट में बुझ पड़ले कोटा बस पर बीटा फ्रिंज उठत ना हम जेमति बाहर करथले यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट रे मो से करू छ किछ करनी yn plus 1 minus yn मो कोन करली ए जो मैक्सिमम कंडीशन जो मैक्सिमम पोजीशन थला एथे n जगह n plus 1 थरे पकेली आउ थरे n जगह n रखली आ सब जेमति लिखि माइनस कला पर केते आसला माइनस करके देखो केते आछी डू इट क्विक how much it is coming same lambda d by d lambda d by d so what you mark in the fringe it before shifting after shifting
No change. Remain same. Remains same. So fringe width remains same. So what is your conclusion then at last? What is your conclusion at last? Only the central maxima changes, but the The fringe whole width remains. the whole interference pattern shift in the opposite direction to that of the source slit without any change in fringe width. The whole interference pattern shift माने पूरा interference pattern टा जहाँ थिला से तळକୁ खसी गला आउ चेंजेस किछि जुआडे सोर्स स्लिट अछि से तळକୁ खसी गला फ्रिंज विड्थ जहाँ थिला से आज एग्जाम रे प्रूव दैट देयर इज नो चेंज इन फ्रिंज विड्थ केते प्रकार से क्वेश्चन बुले बुले करि परिबो हला पढिले तुम आराम रे करि परिबो एनी डाउट the whole interference pattern shift in opposite direction, okay, without any change in fringe width. Car opposite direction re opposite direction of the motion of a source slit. Okay, now again you see that question, what actually I did bit by bit, you see. Now you understood the bits. First bit kौन था? State the condition of constructive and destructive interference. We did it. खाली मु जो डेल्टा एक्स डैश नहीं थी तमे ता प्लेस रे कौन पुट करिया अछि lambda by 4. लंबा में 4 पुट करी तमे एको करिवो हला ऑब्टेन द एक्सप्रेशन फॉर फ्रिंज विड्थ हे गला फ्रिंज विड्थ हे गला नो चेंज इन फ्रिंज विड्थ अच्छा लोकेट द पोजीशन ऑफ सेंट्रल मैक्सिमम हे गला ओके Yes, sir. सेम क्वेश्चन आल्सो आई टोल्ड यू कम्स इन डिफरेंट फॉर्म रे पासबो देखो सैंपल 2015 से कौन आस्तिला. The arrangement used by Thomas Young to produce interference pattern is shown in the given diagram. Justify where there would be no change in fringe width when the main illuminated source is shifted to the position S dash as shown. देखो से कौन कहला सिगला से fringe width चेंज हबनी बोली तुम प्रूव करा ताल तुम कौन करियर अछि एठी position of condition of maxima देखे दे कि तुम डायरेक्ट फ्रिंज विड्थ को पळेबा आ पोजीशन ऑफ सेंट्रल मैक्सिमम करिया दरकार नै डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस भी करिया दरकार नै हला केवल पोजीशन ऑफ मैक्सिमा कर दबो तापरे फ्रिंज विड्थ को पळेबो सीधा सरला से दरकार नै ठीक अछि सेति में क्वेश्चन रे 3 मार्क्स अछि ठीक अछि सेम क्वेश्चन भी तमन को मु कहउतली बोर्ड एग्जाम रे पडला 2019 ने देखा से केमति पडला द फिगर शोस 2019 ने सेम क्वेश्चन पडला see the question. The figure shows modified Young's double slit experimental setup 2019 board exam rasla dekha s dash ta upur shift h dash ta write the condition for constructive interference बुझला एटी किछि लंबा बाय 4 किछि देइनी देखछो ना नहीं पार्ट डिफरेंस विच किछि कहनी तमे केते नै जियो बोली मु तुमको कहिछि निजे निजे चूज करबो Delta डेल्टा X. एक्स डैश हला तो निजे निजे नै तो करबो डेल्टा एक्स डैश राइट तापरे obtain the expression for fringe width देखला fringe width भी पचला हला lambda d capital D by small d fringe width आसलो ओके got it Yes, sir. okay next we'll go to the another question which is the most probable question. See this one 16 sample paper assi 17 sample paper assi but till now not come in the board examination e porjanta asini bada question re now all of you do question number 9 jaha 7 भी share same question same figure everything is same do it
Quick. Read the question. What is it? Very important question this is. गोटे वे अच्छी क्वेश्चन करिवार से कुछ पी पॉइंट रे मिनिमा हबो मिनिमम कंडीशन कोन 2n minus 1 lambda d by d 2n minus 1 whole into lambda capital D by small 2n minus 1 whole into lambda capital D by small d. अच्छा दिस द कंडीशन मिनिमा एटा को यूज करी कि पिला माने करी पकांती आ जतले सने करी पकांती 780 फसे जान तांगर आंसर भूल पळे आसे गोटे रॉन्ग आंसर समथिंग अछि लैम्बडा इज इक्वल टू सम 2 रूट 2 हे किम तोडा आसीबो कोन कैपिटल डी 2 रूट 2 हे किम तोडा आसीबो दैट्स अ कॉमन रॉन्ग आंसर बहुत प्लस रॉन्ग आंसर फस जान ओके एथरे तमे हम जो पूर्वरु डिराइव करिथ्रा मिनिमम कंडीशन तमे पक्की परिबो काहे पक्की परिबोनी बिकॉज़ कि मते कहबा हम काहे पक्की परिबानी तो सेठी S1P और H2P equals to D नहीं था आमे जहाँ भी डेरिवेशन करिथिले आमे कहिथिले हम कैपिटल डी टा स्मॉल डी टू बड़ा अछि हला टिके ग्रेटर अछि कैपिटल डी ग्रेटर देन माने टिक बहुत बड़ा थिबो हला आमे ताकू बहुत नेग्लेक्ट भी करिथिले बट एठी मार्क करो तम उल्टा कैपिटल डी टा स्मॉल डी टू छोट अछि तम क्वेश्चन देखो भले क्वेश्चन समझ देखा होची CS1 होची कैपिटल डी CS2 होची कैपिटल डी तामाने कैपिटल डी और S1 S2 भीतर गैप हुआ में नीचे स्मॉल डी तले स्मॉल डी रादर हियर इज इक्वल टू 2 इनटू कैपिटल डी केमति करिया क्वेश्चन दान कर परिवानी राइट तने सेट पई देखो क्वेश्चन ता हम सॉल्व केमति करिया हमको अथरे मूल रो करिया को पड़ियो पूरा स्टार्टिंग रो क्वेश्चन रो करिया को पड़ियो हला आ गोटे कथा मार्क करो ओ रु p पर्यंत डिस्टेंस ता होची x हला ऊपर क्वेश्चन से x देखेची OP is equal to x तळे भी OP is equal to x देखिए का जिंस दीटा क्वेश्चन सेम OP is equal to x आउ से कहिची p पॉइंट ऑफ फर्स्ट मिनिमम हबो p पॉइंट ऑफ फर्स्ट मिनिमम हबो एंड फर्स्ट मिनिमम फॉल्स एट ए डिस्टेंस कैपिटल D क्वेश्चन देखो एड लिखा है द फर्स्ट मिनिमम ऑन द स्क्रीन फॉल एट ए डिस्टेंस कैपिटल D और p पॉइंट तळु x डिस्टेंस देची OP is equal to x ता माने इनडायरेक्टली क्वेश्चन रे x is equal to केते बोली कहूची D x is equal to capital D हला देखो मु फिगर एडिट कर दोस तुमरा उतरे डबल स्लिट या अछि एटा बोधे थिला S1 एटा थिला S2 ए मझी पॉइंट को से C बोली कहिची एठी गोटे पॉइंट कहिची से P बोली आ S1 सीधा रे जो लाइन ता अछि ताको से देची T1 बोली S2 सीधा रे जोटा अछि ताको से T2 बोली देची ओके तापर एटा हला सेंटर ऑफ द स्क्रीन ता एटा को से x कहिची ओके एटा कैपिटल D कहिची एटा कैपिटल D कहिची तमने अकॉर्डिंगली ओ रु T1 भी कैपिटल D ओ रु T2 भी कैपिटल D हो ठीक अछि बट से जे तू कहिची p पॉइंट फर्स्ट मिनिमा और p पॉइंट लार्ज एट ए डिस्टेंस कैपिटल D तमने से इनडायरेक्टली क्वेश्चन कोन कहउची जे x इज इक्वल टू केते नियो बोली कैपिटल D इनडायरेक्टली क्वेश्चन कोचे x इज इक्वल टू कैपिटल D नियो हला देखा हम केमति करे पुनी मूलर करबा हम माने S2P एटा S1P हला डेटा को बाहर करबा जेमति अंश दबस डेरिवेशन करथिले ओके करी कि हमें ताको तापर माइनस करबा तापर कंडीशन पुट करबा देखो केमति S2P बाहर करबा इन ट्रायंगल S2 T2P देखो S2P स्क्वायर इज इक्वल टू केते बाय S2P इज इक्वल टू केते S2 T2 स्क्वायर प्लस T2P स्क्वायर र रूट ओवर S2 T2 टा केते मते को D D capital D T2P टा केते मते को
capital D plus X. এটা হচ্ছে ক্যাপিটাল ডি প্লাস এক্স, মানে এইট হয়ে যায় ক্যাপিটাল ডি, এইট হয়ে যায় প্লাস এক্স, তো ক্যাপিটাল ডি প্লাস এক্স। ওকে, দেখো ক্যাপিটাল ডি প্লাস এক্স র স্কোয়ার, কিন্তু আমি অলরেডি কোশ্চেনটার এক্স ইজ ইকুয়াল টু ডি বলে জানি সারিছে, তার মানে ডি স্কোয়ার প্লস ডি র স্কোয়ার, তাহলে এটা কেতে আসলা মতে কুহ, रूट ओवर कर दियो मते केते आसला को। √5d √5d, √5 टा बाहर है तो राइट, एग्जैक्ट सेमती तुम बाहर करो s1p, s1p देखो केन बाहरिबो, s1p s1 t1 रो स्क्वायर प्लस t1 p रो स्क्वायर रो रूट ओवर, s1 t1 होची d स्क्वायर, ये होची d माइनस x, भले मार्क करो समझते हला 8 हो जाए d से थ्रू x टा माइनस हो गला, हला d माइनस x, हला इज इक्वल टू d स्क्वायर, x टा भी d हो गला, d d कटि गला, कटले केते आसला खाली d आसला, ठीक अछि। तापरे एबे एक कंडीशन पके दवा, जेतोटा फास्ट मिनिमा मते को फास्ट मिनिमा रे पाथ डिफरेंस ता केते हबा दरकार, हम्म 2n minus 1 lambda. फास्ट No, मिनिमा no, 2n minimum minus 1 2n minus 1. lambda by 2n minus 1 whole into lambda by 2 जे, बट फास्ट मिनिमा रे इन जगह 1 पकेबो ले केते आसीबो lambda 2 lambda by 2 पुट करो s2p minus s1p is equal to lambda by 2 √5d minus d is equal to lambda by 2, तो कैपिटल D is equal to lambda by 2 whole into √5 minus 1. This is the final answer. Okay, very important question, but 90% students they use the conditions from the starting and they face a lot of problem. এই কন্ডিশনটা আমি ইউজ করি পারিবা বিকজ এটা সুপারপোজিশন প্রিন্সিপাল কন্ডিশন, দিস ইজ নট ইন্টারফারেন্স কন্ডিশন, সুপারপোজিশন প্রিন্সিপাল এই কন্ডিশনটা আসছে। I hope everybody understood. yes sir. Let's move to the last question what I discussed, what I should discuss, very important question. Okay, so these questions are very important. तीनटा बीट थिले वाले क्वेश्चन सब वाले एग्जाम पे ए चैप्टर रो बहुत इंपोर्टेंट, एडी जेमति तीनटा बीट अछि ए क्वेश्चन रे। ओके, एटा सब एनसीईआरटी बुक रे एग्जांपल सिबो नले एक्सरसाइज रे अछि, तीनटा बीट वाला जोठी क्वेश्चन अछि सोडा सब बहुत इंपोर्टेंट देखिबो कने एग्जाम रे सर मान को सुविधा हुए क्वेश्चन पके पे, तीनटा बीट पके देबो 1 1 1 3 मार्क्स हेला। ओके, ए क्वेश्चन टा मते लागु छै हम अगरो डिस्कशन करि सारि छै, व्हेन मोनोक्रोमैटिक लाइट इंसिडेंट ऑन a surface apparent to media reflected and refracted light both have same frequency as incident frequency. We have I think discussed this question from the starting of ray optics. Manoj, light incident on the surface, then the atoms Yes, absorb the sir. light, they start oscillating with the same frequency as well as also scatter the light of the same frequency. So incident refracted light has same frequency. Okay, this is the wave optics example. One or two example like this. Question B also same thing. Rarer to denser when light travels, does the decrease in speed implies there is reduction of energy? What is your answer? Speed decreases. Does it mean energy decreases? No, sir. Energy is No, h sir. No. Energy has no relation with the speed here. Okay. So no decrease in energy. Energy only depends on amplitude according to wave optics. Okay.
In wave picture of light, intensity is determined by square of amplitude. What determines the intensity in photon picture of light? Most important question. Tell me the answer. You know this answer in dual nature chapter. Frequency. What determines the intensity in wave picture in photon picture of light? Not frequency. It wants the definition. According to photon picture, intensity is what? According to photon picture. What determines intensity? Tell me quick. Number of photon coming from a source per unit area per unit time. Number of photons coming per unit area per unit time. Okay, that's the most important question. This 16-bit is a very important question. 2015 board exam question. Most important question this is. Okay, this one is more 3 bits are there. Most important. In what way diffraction from each slit related to interference pattern in double slit? Who can tell this answer? What way diffraction from each slit is related to interference pattern in double slit experiment? This is exercise example. Two slits are there. Then interference produced. One slit is there only. Diffraction pattern produced. You now just imagine. When one slit is there, diffraction produced. When two slits open, the diffraction pattern of both of them disappear. Now interference pattern is obtained. What do you mean by this? Interference pattern is the modulated which pattern? Which pattern? Diffraction pattern. Means two diffraction patterns, now they get modulated here. That's called modulated. They get modulated and interference pattern is obtained. जने जने तांको निज निजर diffraction pattern दे थांती, but जितले दीटा को मिसी गले हमको को pattern मिली गला? Interference pattern मिली गला. Problem हो जे exam रे जदि question पड़ी गला, पिला माने भाबंतु मु लिखिबी कोन? पिला के comparison लिखिबा start कर देंदी, के difference लिखिबा start कर देंदी, आ सार माने सब 0 mark दबा start कर देंदी. बुझिल? Exact answer जे तुम न लिखिबो. Individual slits provide their individual diffraction pattern. When both slits open, then the diffraction patterns of them gets modified and interference pattern is obtained. Okay, answer also you'll get in NCERT book in the last page, because this is NCERT book question. Always comes in exam. Many times this questions comes in exam. Bit B, when a tiny circular object is placed on the path of light from a distant source, a bright spot is seen at the center of the shadow of the obstacle. Explain why. Question is coming, when you keep an obstacle in front of a light, its behind should be shadow. Rather, in the shadow, center is bright. Why? So due to diffraction at the edges. Due to diffraction at the edges. But why center is bright? It interfaces at the center of the shadow. Yes, yes. It interfaces at the center of the shadow, which produces a bright Because spot. the path difference of the lights reaching at the center of the shadow is equal to 0, which satisfies the condition of maxima. So that is right. You can write it like this. The path difference between the lights reaching at the center of the shadow getting diffracted from the, or the path difference of light which are getting diffracted from the edge of the obstacle reach at the center of the shadow has a path difference 0, which is condition of maximum. Okay.
Very important question this is. Another question I have already discussed. See bit रे भी अच्छे देखिबो NCERT बही रे exercise रे हला NCERT बही exercise रे एटी 3-4 bit question अछि आ गोटे bit question जोटे already म आगु कहि सारथिली दीटा पिला दीटा अलग अलग रूम रे अछंती they can able to see each other तांग मझे गोटे partition अछि wall रे but they can able to talk with each other. Why? Who can tell me the answer? Wavelength of sound is very larger than wavelength of light. The wavelength of a sound is comparable to the obstacles in day-to-day life. So sound diffracts easily, but light cannot diffract easily. Or it will write the condition for diffraction is wavelength should be nearly equal to size of obstacle. Okay, as obstacles available in day-to-day life are of a size nearly equal to wavelength of sound, so sound diffracts easily, but light cannot. Okay, that's why. So this is all about the important questions of wave optics after.